Good evening students. आज हम गोटे इम्पोर्टाट डेरिवेशन करवा एटा मोस्ट इम्पोर्टाट दरकार एटा आज टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पाखे गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी ता भितर मु गोटे डाइपोल टे नहीं रखिदेली इलेक्ट्रिक डाइपोल टे गोटे यूनिफॉर्म फील्ड भितर नहीं रखिदेली ताले कोनटा हबो एक्जेक्टली आम लिखले टॉर्क पड़ो टॉर्क केमती पड़ो केते टॉर्क पड़ो सेटा आम ये जाना देख ये जो पैरेलल एरोज देखुच दिस सिग्निफाइज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आम लास्ट क्लास पढ़ी पैरेलल एरोज गिव्स यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ता भीतर गोटे डाइपोल अछि ए बी ए रे रहला नेगेटिव चार्ज बी रे रहला पॉजिटिव चार्ज आम जानिछे there is a term called dipole moment which is directed from negative to positive ta mane a ru b ro direction ro hela dipole moment e represents the electric field here p represents your dipole moment which is directed from a to b and tar magnitude hela q into l kono q hela magnitude of the either charge l hela distance between the two point charges that constitute an electric dipole theta kono eti now theta is the angle between dipole moment and uniform electric field. Here, this is the dipole moment and this is electric field. The angle between these two is theta. बुझिया प्रथम कथा हम बुझिबा टॉर्क काहे पड़े ए जिंस बुझिबा आगरो मुटिके एठी आसुची आमे पढितले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज व्हाट the amount of force experienced by a unit positive charge. That means if I mean the definition E is equal to F by Q means force experienced by a unit positive charge. Then E है F by Q तले force कितने होगा Q into E यार meaning टा बुझो ये जिनसे रो meaning टा बुझे रखियो कौन F is equal to QE ना suppose तुम पाकर गोटे electric field अच्छी गोटे electric field existing अच्छी मु ता भीतर आने गोटे charge रखी देली कौन रखली गोटे charge जहाँ magnitude होची Q गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी ता भीतर मु गोटे चार्ज टे रखली जहां मैग्नीट्यूड होची q तो ता ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पकेबो केते फोर्स पकेबो ना F q * E दिस इज वेरी सिंपल मन रखो मोर गोटे फील्ड अच्छी फील्ड रो डायरेक्शन एमती अच्छी ए चार्ज टा जो स्मॉल q मटे नेची तेरा पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे मन रखो जदी ए चार्ज टा पॉजिटिव हेतिबो suppose field direction अछि एपटे मु आनी कि एटी then let's say this is the field हां मु एटी गोटे पॉजिटिव चार्ज टे रखी पॉजिटिव चार्ज ऊपर फोर्स पड़िबो तार मैग्नीट्यूड होछि q * E q टा कोन ए चार्ज रो मैग्नीट्यूड E हला ए फील्ड स्ट्रेंथ मन रखो जदि एटा पॉजिटिव चार्ज हेतिबो ताले फोर्स रो डायरेक्शन रहिबो फील्ड रो डायरेक्शन रे जो आडे फील्ड से डायरेक्शन रे फोर्स बुझियला जदि एटा पॉजिटिव चार्ज हेति जदि एटा नेगेटिव चार्ज हेतिबो ताले फोर्स पड़िबो एटा लिखि देली पॉजिटिव जदि एटा नेगेटिव हेतन ताले फोर्स पड़िथंता पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो आडे ए जदि नेगेटिव चार्ज हेतन फोर्स टा पड़िथंता ऑपोजिट रे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम रखि थाओ अब सेही फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते ना q * E गॉट इट त वर्तमान देखो ए जिंसटा हम एठी देखिबा मु नै गली गोटे डाइपोल टे एठी पॉजिटिव चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज देखो डाइपोल ऊपर फोर्स पड़िबो देखो डाइपोल ऊपर फोर्स माने इंडिविजुअल फोर्सेस चार्जेस ऊपर फोर्स देखिबा हम आउ नेट फोर्स बाहर करिबा देखो एठी ये पॉजिटिव चार्ज थिबारो तार फोर्स रो डायरेक्शन पड़ला टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मैग्नीट्यूड हे गेलो QE ये नेगेटिव चार्ज हेतिबारो मैग्नीट्यूड रहला QE सेम आउ फोर्स रो डायरेक्शन रहला ऑपोजिट बुझियना ताले मु ए डायग्राम टा को एठी आउथरे ड्रा करली समस्त देखो एठी पॉजिटिव चार्ज ऊपर फोर्स रो डायरेक्शंस को एपटे देखे देली F = QE पॉजिटिव पाई एटी हेगला F = नेगेटिव पाई देखे देली QE मैग्नीट्यूड समान किंतु धीरे जाको फोर्स रो मैग्नीट्यूड सिना समान बट डायरेक्शन ऑपोजिट हेगला तमन जदी पचारिबो गोटे डाइपोल ऊपर नेट फोर्स केते ताले नेट फोर्स इज इक्वल टू नो वेक्टर नो नेट फोर्स काई टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस पड़े ताले जो फोर्स पड़िबो तार मैग्नीट्यूड केते हिसिबो नो नेट फोर्स मींस जीरो फोर्स ताले टॉर्क आसले पड़ो जदी फोर्स न पड़िबो ताले टॉर्क पड़ आसला बट फोर्स
पड़ुनी जे एठी हमको देखिया पड़िबो तुम देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स पड़ुची सेटा ए लाइन ऊपर पड़ुची नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स पड़ुची सेटा एपट लाइन ऊपर पड़ुची काहे से माने गोटे दिले देखो चार्ज गोटे लाइन रे नांती बुझियला ताहले एठी कोन हेला ना दीटा देखो फोर्स रो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थिबारु लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थिबारु आमे कहि परिबा दे कन्स्टिट्यूट अ कपल एमान गोटे कपल को जे कपल ऑफ फोर्सेस आ गोटे कपल कोन करंदी ना टॉर्क प्रोड्यूस करे तले हमर टॉर्क रो डेफिनेशन होची कोन ना दीटा फोर्स जो अछि तार भीतर थिबा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एनी फोर्स रो मैग्नीट्यूड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर टॉर्क ताले टॉर्क काहे की पड़ला बिकॉज़ on the dipole two equal and opposite forces are acting and the line of action of the two forces are different. That's why they exert a torque on the electric dipole. ताले torque रो magnitude पाया पाया हमें formula पकेले r perpendicular into f. एटी r perpendicular कोन ना line of action भितरे धीरे देखो फोर्स जो line of action अछि तांको भितरे थिबा perpendicular distance. This is in the diagram it is your BC. And if time is QE, बर्तन पके दवा, so which implies tau is equal to how much? R perpendicular. ताले geometry के use करिवा. If this is theta, AB रो length हेला L. Length of AB is equal to L. This is the length of the dipole. So if this is L and this is theta, ताले a triangle BC is the perpendicular. Perpendicular हमें नहीं गले. So we can find out that BC will be L sin theta. Perpendicular to sin theta component को so so torque is equal to now हमें पके value which is L sin theta into F. F टा कितने Q into E. So which implies we can write tau is equal to Q into L into E into sin theta. Q into L is what? Which implies torque is equal to Q into L is equal to P. So which is PE sin theta. So it is the magnitude of the torque acting on an electric dipole. ताले देखो एटी हम एटा को वेक्टर torque टा गोटे वेक्टर क्वांटिटी so we can write it in a vector form and the vector form is tau vector is equal to p vector cross e vector. हमर जेंति right hand screw rule अछि we can apply the right hand screw rule and find out the direction of the torque which is p cross e, direction of p cross e. Got it? ताले एटा हला torque रो direction. हमें एटू बाहर कर परिबा जे what is the condition which there will be no net torque means torque will be zero सेमति तो फोर्स भी जीरो पडुची हमें कंडीशन बाहर कर परिबा torque ता कोटी मैक्सिमम होची कोटी मिनिमम होची minimum value will be 0 and maximum value will be PE. That means it depends on the value of your theta angle theta. ताले मेटी बाहर कर दे परिबा गोटे जिंस tau max एटू हमें बाहर कर दे परिबा torque maximum which is equal to PE because when sin theta is equal to 1 which implies when theta is equal to 90 degree because sin 90 is 1 and tau minimum torque will be 0 which implies when theta is equal to either 0 degree or 180 degree. It is important मन रखो theta 0 degree माने P and E are P vector and E vector are parallel. Theta 180 माने P and E vector are anti-parallel. इटा मन रखता. एटी कोना P and E are perpendicular with each other. ताले इटा ला maximum torque condition. This is the minimum torque condition. So this is most important.